I welcome you all. Thank you very much, all of you, to be here in this webinar on Bharatiya economic model. We are indeed very lucky to have Sri Sridhar Vembuji with us, Sri Kashmiri Lalji, National Organizer of Swadeshi Jagran Manch, and also Sri Dhanpat Agarwalji, National Co-Convener of Swadeshi Jagran Manch. We also have prominent people from different fields attending this webinar. Many people who have been working in the social sector, people from corporate sector. We are also having Sri Chandrasekharji, former IT secretary, who also gave his presentation earlier in a webinar on IT. So I welcome you, everyone. I'm sorry I am not naming everyone, though I know all of you have standing of your own in different fields. So before starting, I'll introduce Sri Sridhar Vembuji, though all of us are familiar with him. He's well known. He's active on social media, and a lot is being written about him. Not only because he's among the top 50 billionaires of India, but also because the amount of goodwill and respect he has gained all over the world. So again, for the formality, I'll give a very brief introduction of Sridharji. Sridhar Vembu is the founder and CEO of Johor Corporation. He was born in 1968 in a family of landowners from a village in Tanjavur district, Tamil Nadu. He studied in a Tamil medium school, and after school he graduated with a bachelor's degree in electrical engineering from IIT Madras in 1989, and thereafter he earned his MS and PhD degrees from Princeton University in New Jersey, United States of America. In 1996, Sridhar Vembuji, along with his brothers and friend, founded a software development company for network equipment providers called AdventNet. And this company was renamed as Johor Corporation in 2009, focusing on providing SaaS, what we call as software as a service, support to customer relationship management services, CRM services. At present, I do not have the correct figure Vembuji has, but as per the record which are available on Google, Johor has more than 6 crore users worldwide, and its profit in last financial year was nearly 2,000 crore rupees. Profit alone was 2,000 crore rupees. Sridhar Vembuji is renowned for taking software and product development functions from urban centers into villages of India, particularly in Tamil Nadu, where his office is there, and he's also based there most of the time. Specifically, his company Johor established its offices in rural Mathalam Parai, Tenkasi district, Tamil Nadu, and in suburban Renigunta, Andhra Pradesh. Earlier, he worked in USA for some years, and thereafter he shifted base over here. Still, there are offices in all parts of the world, and revenue is also global. A fraction of that comes from India, but his emphasis on training Indian youth, particularly youth from villages, and making them software engineers, designers, coders, that is quite appreciated. So in 2004, he set up Johor Schools to provide vocational software development education to rural students as an alternative to formal university education, which people, all of us, strive for a degree. A statement from the company states that more than 50% of its engineers have no college degree. So that is a big achievement, that he has trained students from villages, only school pass outs, and made them, you can say, skillful engineers, productive engineers. But these students received vocational education from Johor schools. In 2020, he announced a rural school startup focused on free primary education also. Sridhar Vembuji was awarded with Padma Shri in 2021. And the same year, he was appointed to National Security Advisory Board. On behalf of India Policy Foundation, I welcome you, sir, for giving us your precious time. We understand the kind of pressure you have, the kind of demands on your time.
And we are indeed lucky that you agreed to give your precious time for us and to speak on Bharatiya economic model. Our other speaker today, Dr. Dhanpat Ram Agarwalji. Dhanpat Ram Agarwalji is national co-convener of Swadeshi Jagran Manch. We have worked together. I was Swadeshi Patrika editor in 2002. Since then, I have known him. We have worked for long together, and it was my pleasure to learn from him. He is an expert of IPR and patents, and basically his profession is in the field of accountancy and tax laws, and he has been active for more than 35 years. He did his graduation in from St. Xavier's College in Commerce, and then attained a degree of law from Calcutta University. Thereafter, he did his PhD from North Bengal University, uh, mainly for Swadeshi movement also. He has provided inputs related to issues concerning World Trade Organization and intellectual property rights. He regularly participates in national international seminars on WTO and related topics, and he has written innumerable articles on these issues, presented papers at various forums, national and international. And he has also been part of various conferences, seminars, and for other workshops on these issues, and has mainly written and spoken on GM issues, on Brexit, on GST, and he has been regularly organizing an international conference on intellectual property rights, known as Global Intellectual Property Convention, for the past 10 years. His major thrust is thrust area of research is exchange rate and IPR, two pillars which he believes can move India ahead as a strong nation in the world. His focus is also on Bharatiya economic model. So we are very lucky to have two domain experts, to people, two individuals who have made a mark in different fields. And to start with, see, the topics today is Bharatiya economic model and why it is important considering the situation which we see all over the world and what we have seen and what we have experienced. Why it is important to have a relook at the economic model, which is considered a very successful and very productive model, and mainly it's a job centric model. It's a sustainable economic model. So over to you, Sridharji. Namaskar, everyone. Today, auspicious Tamil New Year Day. So we are celebrating Tamil New Year today. Vanakkam. Happy Tamil New Year to everyone. So I want to provide a background on what I call the Bharatiya economic model. To me, primarily has to be strengthening our grassroots, strengthening our rural areas, and our dharmic civilization cannot survive purely as an urban civilization. We have to have the strong base of our rural areas, and we have to make them economically and socially stronger. So that is my starting premise. And so I will start with the approach. If you take even 100 years ago, 200 years ago, go back in history, an Indian village had a very self-reliant local and regional economy. So what I mean by that is our ecosystem of not only farmers. It's a mistake to think a village means only farming or agriculture. We had weavers, potters, mason, carpenter, ironsmith, goldsmith, and rural vaidyas. All of it, and many more from all other professions. So I'm just mentioning the manufacturing oriented ones. So all of these were present in a village and or nearby cluster of villages. So this led to a today, if you look at 2022, and I see this in my own village very clearly, the people who are third generation, fourth generation descendants of those rural craftsmen are either landless labor, because these were not primarily farming focused. They were in various
trades and crafts. They are now landless labor or urban migrants. In other words, our surplus rural labor situation is directly due to their loss of livelihood from all of our traditional, the destruction of all of the traditional rural based industries. That's a very important point to understand. In other words, revival of rural areas is not only revival of agriculture, though that is important. It is also revival of rural based production networks for various categories of goods and services. It's a very important point that I want to make. And so today, if you look at the assumption of conventional economic theory, what is mainstream taught in the West and taught in our own universities, colleges, mostly, is that villages will continue to decline and urbanization is vital for prosperity. That has been the assumption behind, if you go scratch the surface of what leading economists have been saying, it is really that we have to urbanize. We have to urbanize. And villages cannot compete. Villages will decline. We have to accept that. And urbanization is vital for prosperity. And I would call this the Western derived economic model. And for that, we have to have a very strong alternative we have to present of a Bharatiya economic model. And I'm going to call it a dharmic economic model. And how does it fit in with technology and other trends today? So, in my own belief, and based on what we have seen in our company and what we are doing, the work we are doing in Zocar, is that technology trends can help reverse this rural decline. We can not only arrest it, we can make rural areas stronger. We can strengthen our foundations as a nation and as a civilization using technology trends. Correctly leveraging the technology trends, I believe it is possible. And to this end, survival and prosperity of our rural areas depend on spreading technological know-how and capability. And I'll go into some detail on this. If you take our rural areas today, we have demand. If you take any village, and including my village, every youth, every young person has a motorcycle. Most everyone has now a smartphone. Refrigerators are arrived. But how are they acquired? If you look at that, mostly everyone has also an EMI payment. Multiple EMIs, monthly payments now. So, motorcycle payment, smartphone payment, refrigerator payment, all of that is there. And even your agricultural worker that I am familiar with, many of them have monthly payments. So all of those demand for all of these goods, household goods, and many more categories is mostly enabled by debt. And it is the debt in turn that causes the rural economic distress. So our own very wants and needs, without the matching capability to produce, without the productive infrastructure for all the goods we need, it is creating the debt and therefore creating the distress. So this is the most fundamental problem. This comes from the idea that if you don't have balance between production and consumption, if you consume without producing those, without the capabilities, that lack of balance leads to debt and eventually distress. And Sri Lanka is classic example of where the debt-oriented distress has taken them. And so rural prosperity is primarily and mostly about balancing production of manufactured goods with local consumption. And so we have to enable more rural-based production. It's not just production, but also rural-based production, because otherwise we are again leading to the path to massive urbanization. And
This urbanization has two major issues for me. One, extremely high land prices. So the cost of the living cost of living in an urban area, a big city, is often 10 times that of a rural area. There is a 10 times difference. Primarily driven by land, rent, and which raises the cost of living for everything. To give an example, in my village and the nearby region, you can get a house for rent for as low as 1,000 rupees, sometimes 500 rupees. Even a decent house is not more than 1,500 rupees a month in rent. But in the city, there will be at least 15,000 rupees. So there is a 10 times difference in that. And that is in a lot of other areas, this goes. So it's important to not only produce, but enable production in rural areas so that we retain our population in rural areas. And this urbanization also is leading to environmental distress, infrastructure stress, all of those problems. So one reason I moved myself to a village is to restore that balance, to help restore that balance, to be able to create those jobs, productive jobs in rural areas. And how do we enable that? How do we enable rural productivity? And I'm going to reduce it to one simple idea here: low cost capital goods strategy. So I'll explain this. This is what I'm doing most of my rest of my presentation about, the low cost capital goods. And I'll come to the example of IT industry first as an example, where the crucial capital good is a personal computer and the smartphone and network. And today, the personal computer is readily available, easily available. Smartphone is everywhere. And the network also, thanks to the smartphone itself, the network is very readily and cheaply available. These ingredients are what enabled the IT revolution to reach rural areas. Without it, a company like Zoho could not operate in a village like Matalampare in Tenkasi. And India's IT revolution happened because the means of production, the personal computer or the capital goods, as we call it, got cheaper and became widely available. So millions of our programmers could have access to the capital good necessary, the personal computer, and create software code, and that is what enabled our IT revolution. And if we still, in contrast, if still personal computers were not invented, smartphones were not invented, computer only meant mainframe big computer, we could not have created all these rural development sector like we have in Tenkasi. So it is very critical. The capital goods coming down in price is very critical for rural development, rural software development to take off, to be viable at all. In fact, all of India's software industry itself owes a lot to the personal computer revolution. And the same personal computer revolution enabled us to create rural jobs. And applying that same exact strategy, a broader capital goods revolution, similar to the mainframe to PC. So exactly how the mainframe to PC happened, and I believe a broader capital goods revolution in mechanical, electronics, electrical is coming, and I believe our nation, Bharat, can lead this way. We can lead that wave of capital goods revolution. And the crucial technology trend is mechatronics, where mechanical, electrical, electronics, software are blended. We essentially miniaturize and massively cost reduce capital goods. What we call the factory sector, the capital goods that are crucial enablers of production and productivity, can be made lower in price and made available to many more people. And the example of that kind of trend is, you take an electric car or electric auto rickshaw, like I own an electric auto and electric car, and Mahindra Auto and Tata Nexon EV. The electric vehicle is a lot simpler in terms of mechanical parts,
than its corresponding internal combustion engine. In fact, the number of parts in an electric car is 20, 30 times lower than in a regular car. It's a lot less complicated device. And so it is possible for an electric auto rickshaw, for example, to be assembled in a rural factory, while a corresponding internal combustion engine counterpart will be much more complex. It may not be possible to assemble. So in this case, this revolution with what happened in the electric vehicle can actually enable a different distribution of industry itself. Rather than few massive factories situated in a big urban center, very smaller factories can actually become competitive. And that's because of the reduced complexity. And the complexity has also moved to software. And in these mechatronic devices, the power is conveyed electrically and controlled electronically. That means all you will see are a lot of wires going around, not gears, belts, all that. The mechanical systems are replaced with electrical and electronic system. And there is a software brain controlling all that through those cables. And so power is conveyed electrically and controlled electronically. That's what we call it. And this particular technology is not just technology. This could cause a revolution in the way that we manufacture. It could cause not only a technology revolution, but corresponding rural economic transformation. And the control systems for it, the brain is all in the software, and the increasing value of an electric vehicle is in the software. And this is important to note because, again, our nation is very good at software, and we have a lot of rural talent, as we ourselves have developed, that can produce that kind of software. So this is something that our rural engineers can produce, this software that controls the brains of these electric vehicles. And it's not just electric vehicles, all manner of capital goods. So what is true for the electric vehicles applies to many, many different kinds of the factory equipment, whether it's textile machinery, whether it's other kind of production machinery. All of them can actually exploit this technology trend. We can miniaturize, make it cheaper, make this affordable. And this is the critical part. So our rural craftsman can be enabled, rural entrepreneur can be enabled to be a productive participant in the economy, supplying the local goods needed. What kind of goods have in mind? So mechatronics, I mentioned, allows the factory machines to be smaller, less complex, and controlled by software, which we know how to produce, and therefore more affordable. And so smaller scale decentralized production becomes economically viable. This is a very critical observation that we can make smaller scale decentralized production economically viable. And two major implications of this I'll highlight. So rural prosperity can be achieved by enabling our rural population to be producers rather than only be consumers of manufactured goods, particularly household goods. We take an average household, even in a rural area, now increasingly they have the goods. For example, the refrigerator is becoming more widely available now. Almost every household will have now a motorcycle and many other classes, ceiling fans, and then your iron box. All of these kinds of household goods are spreading in rural areas, but except that they are not active producers and participants, they are thought of as passive consumers. We have to change that dynamic. People have to be enabled to be producers and therefore job creators and also employ productively and consumers. So we have to match the consumption and production with consumption. And this actually also then helps the agricultural sector because agricultural productivity can also go up by lower cost capital goods for farmers. In the farm sector, now we need all manner of machines that can be done in smaller scale machines, low cost machines that can help the farmers. And then this has, I won't go into this, the same technology is the foundation of a lot of defense. We take drones,
all of that. These are all mechatronics. So, which strategic defense implications that I won't go into further. So, ultimately, this is all coming from the source of knowledge, the knowledge of how to produce these, the capital goods revolution, and then how to use them. That is the skills we talk about. So, using the machinery is skill, producing the machinery is knowledge. And today, we need to gain that knowledge and the skills in our nation because major powers assert their control through their control of this know-how, this knowledge. And our sovereignty and security as a nation depends on gaining this know-how. So it's not only important for rural prosperity, rural revival, but also sovereignty and security. This technology is very vital because of its implication for defense and other sectors. So how can we accelerate this capital goods revolution in India? So I give the UPI as an example of our success story. By now, everybody sees how much of a revolution in payments India has achieved. India has leapfrogged Western countries, particularly America, in payments. And how is that possible? And extraordinary low cost and extremely available. Even small towns everywhere, UPI payment are accepted. And what enabled this is the adoption of standards in identity, Aadhaar, and mandating the adoption of UPI across banks. The standard. There is a standard way for banks to interconnect, and there is identity that is standardized. That's what in effect, the standards are like our broad gauge standard for trains. The government adopted the standard, mandated it. Now it would be possible for even private sector to participate in our train network. For example, make rail car, the passenger cars and engines, all of that, because the standards are now set. Now the private sector can produce those standards. That's what is happening in the payments space. And the open network for digital commerce, those standards are trying to open up the e-commerce ecosystem so that we avoid again a monopoly forming in e-commerce, like it has happened in America and other nations. India can have a much more open network by creating standards so that every participant is on an equal footing. The standard is like, for example, this meeting has no standards. So today, your Google Meet cannot participate in Zoom meeting, cannot participate with Zoom, all of that. By opening up, mandating that standard, we can force interoperability across all these providers. That kind of standard is necessary for capital goods as well. That is my primary point. So for machine tools, all of that, particularly those that make the household goods, we have to come up with standards and mandate those standards. The private sector can compete, but compete based on, for example, we can compete in email, but the email is a standard that is open to all. And the similar standards affect whether Europe is now standardizing instant messaging. So WhatsApp or Telegram or other providers have to interoperate. The European governments are now starting to standardize that. A similar effort is what will open up markets, and this is important for bringing down the cost of machine tools so that the various tools interoperate and there are standards. And so these are the actions I would recommend: industrial R&D policy, economic policy, and procurement policy. I'll just briefly address them. So we have to holistically go through all of them. So a strong R&D in capital goods for consumer goods, meaning we want capital goods that can help make our household goods, helping miniaturize them for broad affordability. All this, the talent exists in our research institutions, IITs, all that. I visited IIT Madras. There is a manufacturing research, advanced manufacturing center. We have really outstanding engineers, guided by outstanding professors. All of this has to become part of our policy thrust in standardizing this. And specifications, protocols, open standards for the machines are needed to enable workers to be productive. And then you look at the manufacturing, casting and molding, cutting, bending, shaping, grinding, polishing. All of these are work our rural craftsmen can do. And the automation tools that enable the worker to be productive in a rural area, all this have to become very affordable so that people can become producers
themselves. And small scale industry takes off in rural areas. And it can compete based on productivity with giants. And the open source and open standard principles have to be applied to capital goods. So again, the research labs I mentioned, they have to create those designs and standards. The government has to adopt and mandate and promote. This is what happened in UPA. UPA was created by a non-profit think tank, and then it became broadly adopted. The government mandated it, and now it is an outstanding success. India has the largest payment system in the world by far, at a very, very low cost, extremely low cost payment system. So, and the designs for capital goods should be open sourced. Private sector will be encouraged and incentivized to make them. It's very critical so that the designs are widely available, so anybody can make them and anybody can participate in those markets and enable this. Just like the PC market. PC is a very open design. A lot of vendors supply PCs in a similar way. Same thing with Android phones. It's an open market, a lot of vendors. So they became more and more and more affordable. This revolution is needed in capital goods. And lowering the cost of capital goods, making them widely available by standardizing them can allow us to create a leapfrog over the West, just like it happened in payments. This is what I believe. And in fact, I'm actually personally investing in creating this specifications right now. But I think a lot more effort, we can actually leapfrog as a nation. And policy support, industrial policy, first, back to tariffs. So that, for example, household consumer goods, we have to make sure that we do not encourage any imports. We take a very strong stance against importing of household consumer goods. We should not be importing nail clippers. We should not be importing ceiling fans. We should not be importing iron boxes, all of those things. Refrigerators, all the components, all of them should be mandated to be produced domestically. That will encourage the demand for capital goods. And domestic sourced capital goods investment must get preferential tax treatment. What I mean is, if you bought domestic capital goods to set up your thing, you can get instant depreciation. So these kinds of tax policies can encourage buying more domestic. And government procurement rules for many goods, government offices buy ceiling fans and refrigerators and all that, they should mandate local production. And so this is the theme for technology-enabled, decentralized rural development. This I want to, this dream is achievable because I believe, first, rural infrastructure and connectivity. Rural roads are getting better. I know because I travel on them. And the rural infrastructure is getting better. Fiber optic connection is now more and more available. And our government has a policy to enable fiber connectivity to all our villages, which is an excellent policy that is very important because even more than road connectivity is the digital connectivity. And now I will look at the other positive factors other than capital goods. Low cost of real estate, rural areas, 10 lakhs per acre versus 10 crore per acre in big cities, or 20 crore, or even more. And low cost of living enables us, our labor costs are lower because ultimately a 15,000, 20,000 rupees job in a village actually enables a higher quality of life than even 40, 50,000 rupee jobs in a big metro. And low cost marketing, if we serve local markets, cost of marketing can be lower, and low cost of logistics because we don't have to transport goods all across everywhere. So if we can get the capital goods revolution going, all of the other low cost of real estate, low cost of labor, low cost of marketing, and low cost of logistics together can make this dream possible. So we can spark an industrial revolution in rural areas. So I fervently believe this. This is what I'm actually working towards now, helping to realize this vision. So the revolution, this is uniquely Indian because that whole mix is not being put together by any other country. So we will be uniquely Indian in our approach. So this is the ingredients: capital goods, land, labor, marketing, logistics. These savings together can negate the scale advantage they tout for very large scale manufacturing. If you look at the numbers, it's not actually true that very large manufacturing is always more productive because all these things add up. The cost of land, the labor, because of the cost of land, cost of living,
marketing, logistics. If we cut down all that, we can negate any disadvantage from smaller scale production and be very, very cost competitive. And this is the final point. We cannot allow rural areas to decline because our culture, our dharma, all of that, really truly the soul of our nation is in rural India, and we have to preserve that. So this is a strategy to recommend for revival of rural areas and revitalize our civilization. So thank you very much. Thank you very much, Sridharji. It was really enlightening to listen to your insights and your very valuable suggestions for India's development, particularly through rural areas becoming production centers instead of remaining consumers. So shifting the, you can say, the wind which has been going increasingly towards urbanization and creating a lot more problems in the urban centers also. So it was really wonderful, and I'm sure with your insights and with your dedication and devotion, and definitely there will be, and having a very sensitive political leadership emphasizing on Atmanirbharta, I'm very sure your insights will go a long way in changing our economic conditions and you can say overcoming the problem of unemployment due to increased urbanization and due to increased centralization of production. So it was really great and good to have you here. We will our participants will have some questions, but before taking those questions, I would request Dhanpatji to give his presentation, and then we will take questions for both of you. Now I request Dhanpat Agarwalji to please give his insights, his valuable guidance on Bharatiya economic model and why Bharatiyata is so critical for our Arthaniti. Why Swadeshi is a critical component of Bharatiyata and Atmanirbharta. So over to you, Dhanpatji. नमस्कार। इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित आज की इस संगोष्ठी में और विशेष करके कुलदीप रत्नू जी जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन में आज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो कुलदीप जी को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मेरे सहभागी मित्र अभी जिनको आपने समय सुना, श्रीधर पेम्बू जी जो जोहो कॉरपोरेशन के सीईओ हैं, और व्यक्तिगत जीवन में भी मैं उनको जो देख रहा हूँ कि वो जो कहते हैं उसको अपने आचरण में लेते हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो अपने कैसे गांव में हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके और स्वयं जो है साइकिल से सारे गांव में घूम घूम करके और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए कैसे काम कर रहे हैं। तो हम उनसे काफ़ी प्रभावित हैं और आशा करता हूं कि जो है इस तरह के और उद्यमी जो हैं हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे देश के नागरिकों के उत्थान के लिए जो है और सामने आएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आज का जो विषय रखा गया है भारतीय आर्थिक चिंतन, मैं समझता हूं कि हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने अर्थ के संबंध में जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही है उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म को आधार बना करके और इसके ही आधार पर ये कहा है कि अभ्युदय निश्रेयस, अर्थात हमारा भौतिक विकास भी हो और हमारा आध्यात्मिक विकास भी हो। और इसी दृष्टि से हमारे सभी मनीषियों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अगर लेते हैं तो उन्होंने भी जो है एकात्म मानव दर्शन के द्वारा, और राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को जब उनके थर्ड वे के दर्शन को जब देखते हैं तो वहां पर भी हम यही पाते हैं कि वर्तमान में जो आर्थिक विकास के मॉडल जो पाश्चात्य देशों द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं
तो हम ये मानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। और ऐसे के अंदर में अभी जो भूमंडलीकरण का जो दौर पिछले लगभग 30 साल से जो चल रहा है, और उसका जब सिंहावलोकन करके देखते हैं कि पिछले 30 साल में जब ये 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और आज हम पाते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारे युवाओं के लिए रोजगार की। हम सभी जानते हैं कि रोजगार एक ऐसा विषय है जिस पर अ, हमें अपनी सोच को भी, समझ को भी ठीक करना ज़रूरी है, और हमारे जो अर्थनीति में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे सामाजिक चिंतक हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, सभी को इस विषय में ज़रा गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। जब कभी हम आर्थिक नीतियों के बारे में सोचते हैं, तो आर्थिक नीतियों का मूलतः उद्देश्य क्या होता है? मूलतः उद्देश्य यही होता है कि जो लोग हैं देश में, समाज में, उनके जीवन और जीविका की उपयुक्त व्यवस्था करना। और जब जीवन और जीविका का विषय आता है, तो इसमें जो अर्थनीति के हिसाब से जो शब्दावली हम देखते हैं, उसमें एक है कि भई लोग अ, गरीबी से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लोगों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और लोग कहीं महँगाई की चपेट में तो बहुत ज़्यादा त्रस्त नहीं हो रहे हैं। तो ये जो ट्रायो है, जिसके अंदर में पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज़ और इन्फ्लेशन, इन 3 विषयों का विशेष करके हम चिंतन करते हैं। ऐसे के अंदर में अभी जो 30 वर्षों का जो अवलोकन करके देखा गया कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो आर्थिक प्रगति हो रही है, उस आर्थिक प्रगति के साथ-साथ में जो विषमता समाज में देखी जा रही है। आज भारतवर्ष के अंदर में 10% के करीब लोग जो हैं, वो 77% से ज़्यादा हमारी वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी जो है लगभग 25% लोग कमोबेश गरीबी रेखा के नीचे हैं, और आज भी जो है लगभग 10% आप एवरेज में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन लेंगे, तो इतनी करीब-करीब जो है डबल डिजिट के आसपास हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। और महँगाई तो मान लीजिए कमोबेश होती रहती है, उसके लिए जो है हमारी रिज़र्व बैंक और हमारी सरकार जो है अलग-अलग समय पर अलग-अलग कदम उठाती है। ऐसे के अंदर में अभी विशेष करके एक तरफ कोविड की समस्या और दूसरी तरफ वर्तमान में हम जो यूक्रेन और रशिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं, और इन दोनों के बीच में जो अ, अर्थव्यवस्था जिस तरह से सैंडविच हो रखी है, और इसके समाधान के लिए जो स्वदेशी जागरण मंच ने विशेष करके पिछले दिनों अ, 23, 24, 25 सितंबर, इसमें श्रीधर गंगू जी ने भी जो अपने विचार रखे थे, और एक अर्थ चिंतन के बारे में बहुत सारे विद्वानों के व्यूज लिए, और उसमें यही पाया कि भी जो है हमें ऐसी कोई अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जरूरी है जिससे एक स्वावलंबी भारत का हम रूप देख सकें। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी पिछले दिनों 23, 24, 25 फरवरी को दिल्ली में भी एक बैठक आयोजित हुई, जिसके अंदर में भारत के सभी हिस्सों से जो है विद्वान, जो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर तथा आर्थिक स्तर पर सभी दृष्टिकोण से लोगों ने विचार रखे, और उसमें यही पाया गया कि हमें एक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। और वो मानसिकता में बदलाव 2 विषय पर होना ज़रूरी है। एक तो कि भई हम हमारे जो उपभोक्ता की वस्तुएँ हैं, जिसे हम भोग कर रहे हैं, जिसको एक संयमपूर्ण उपभोग होना चाहिए, और उसमें हम स्वाभाविक रूप से देसी वस्तुओं का उपयोग करें। और देसी और स्वदेशी में भी थोड़ा-सा अंतर इतना सा ही है कि देसी का मतलब जो लोकली जो अवेलेबल है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी जो है वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, मई 2021 में जब
मई 2020 में जब ये कोविड की समस्या शुरू में आई थी, और एक आत्मनिर्भर भारत निर्माण के पीछे उन्होंने यही कहा था कि जो है हमें स्थानीय वस्तुओं के यूज़ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जब ऐसा हम करते हैं तो एक तो क्या है कि हमारे देश पर जो विदेशी वस्तुओं का, जैसा अभी सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि अभी हम देखते हैं कि प्राय सभी हमारे उपभोग की वस्तुएं जो है हम बाहर से मंगाते हैं, चाहे चाइना से मंगाते हो चाहे बाकी दूसरे देशों से मंगाते हो। तो देसी और स्वदेशी, इन के आधार पर अगर हम अपना उपभोग करते हैं तो इससे जो है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं तथा अन्य जो अ अ, अन्य 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 भागों में जो लोग रहते हैं, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करने से एक तो ये होता है कि हमारा जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, वह बढ़ता है, और दूसरा जो है हमारी जो निर्भरता है बाहरी वस्तुओं पर, और विदेशी जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो उससे जो है हमको जो विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, इसका भी बोझ जो है अल्टीमेटली हमारे देश पर गिरता है। तो इसमें पाया गया कि देशी हो या स्वदेशी, तो उसमें एक चैलेंज है कि भई हम स्वदेशी वस्तुओं को विदेशी की तुलना में जब हम पाते हैं, तो वहाँ एक सवाल आता है कि गुणवत्ता, उसकी क्वालिटेटिवनेस अच्छी होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर जो है उसकी जो प्राइस है, प्राइस जो है वो भी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए प्रतियोगात्मक दृष्टि से, क्योंकि अभी हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में ये तो एक नहीं कर सकते कि जो है हम विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करेंगे, क्योंकि उस तरह के बहुत सारे डब्ल्यूटीओ के इत्यादि बहुत सारे रूल्स हैं। किंतु अगर हम स्वदेशी वस्तुओं को गुणवत्ता की दृष्टि से और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो उसमें जैसा अभी सुदर्शन जी बता रहे थे कि आपको टेक्नोलॉजी के अंदर में, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में जो है हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हमारे जो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनकी क्वालिटेटिवनेस और कॉम्पिटिटिवनेस को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके साथ ही अ, हमको ये भी ध्यान देना होगा कि एक तरफ जब हम स्वदेशी वस्तुओं को व्यवहार करने की जो मानसिकता है उसमें जब बदलाव लाएंगे, तो साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो रोजगार का विषय है, उसके अंदर में भी एक मानसिकता के अंदर में बदलाव की आवश्यकता है, और वो मानसिकता ये होनी चाहिए कि जो है हम ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस में और जो यूनिवर्सिटी से या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकलते हैं, वो पहला ही उनका दिमाग में एक रहता है कि हमको नौकरी मिलनी चाहिए, कैसी नौकरी मिले। तो वहाँ अगर हम एक ऐसा परिवर्तन उनके मानसिकता में लाने की कोशिश करें, जिससे कि जो है वो जॉब सीकर ना होकर के जॉब प्रोवाइडर बने, तो इसके लिए जो है एक ऐसा विचार हुआ कि जो है इसके लिए एक जन जागरण का अभियान बहुत ज़रूरी है। और अभी स्वदेशी जागरण मंच ने जो है इसके लिए, और जैसा अभी संघ की जो बैठक हुई प्रतिनिधि सभा, उसके अंदर में भी जो प्रस्ताव लिया गया, उसमें स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है एक सबसे प्रमुख बात जो आई कि भाई हम उद्यमिता को कैसे अधिक से अधिक विकसित करें। उद्यमिता से तात्पर्य यह है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो लोग निकल रहे हैं, वो रोजगार सृजन में कैसे युक्त हों। तो रोजगार का सृजन करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ताकि जॉब सीकर से हम जॉब प्रोवाइडर बने, और हमारे जो बाहर से जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसको हम एक चैलेंज देते हुए हम अपने क्वालिटेटिव और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर जो है हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। यानी भारतीय जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए हमें स्वावलंबी भारत का निर्माण करना जरूरी है। और इसके बैकग्राउंड में मैं यही बताऊंगा कि अभी जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वाधीनता का 75 वर्ष हमारे हो गए हैं, और जब हम ऐसी स्थिति पाते हैं कि देश के अंदर में गरीबी बनी हुई है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसे के अंदर में जब हम अपने भारतीय दर्शन को देखते हैं और हमारे ऋषि महर्षियों की जो बातें ध्यान में रखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बार जो है हमें इस बात का अवलोकन करना जरूरी है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। तो विश्व की जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ हम कहाँ हैं, उसको पहले जानना जरूरी है।
और वहां हम पाते हैं कि आज वर्ल्ड की जो जीडीपी है, यानी कुल मिलाकर के जो पूरे विश्व की जो आय है, वो लगभग 90 ट्रिलियन डॉलर है। 90 ट्रिलियन डॉलर के अंदर में मुख्यतः अगर हम 5 देशों की अगर तुलना करें तो उसमें नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसकी कुल आय जो है 21 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर चाइना है, जो लगभग आज के दिन 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तीसरे नंबर पर जापान, जिसकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर है। चौथे पर जर्मनी है, जिसकी इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर पर है। और पांचवें और छठे के बीच में थोड़ा सा मार्जिनल थिन लाइन चलता है, किंतु लगभग जो है भारत अभी विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। कभी कभी तो हम ये इस बात पर गर्व करते हैं कि जो हम वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बट किंतु मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ यही एक इंडिकेशन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि वास्तव में कि क्या ये अभी जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हमारी आज की अवस्था, और हमारे प्रधानमंत्री जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखे हुए हैं, क्या वहीं तक हम संतोष कर सकते हैं? तो इसको जब हम पाते हैं, इसको अगर हम पॉपुलेशन के रेशियो से अगर तुलना करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड की आज उनकी जो पॉपुलेशन है लगभग 30 करोड़ 33 करोड़ की पॉपुलेशन, और वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 5% है। और जीडीपी जो वर्ल्ड की है उसका 21 से 22% हिस्सा उनका बनता है। चाइना जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 19 से 20% है, और उनकी जो वर्ल्ड की जो इनकम है उसके अंदर में वो लगभग आज के दिन जो है 17 से 18% हिस्सा उनका बन जाता है। भारत की जो पॉपुलेशन है वो 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और हम जो है 3 to 3.5% जो है वर्ल्ड की इनकम का हिस्सा रखते हैं। तो यहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि हमसे जो बाकी जो राष्ट्र हैं वो अपने पॉपुलेशन से, अमेरिका तो जो है लगभग 4 टाइम्स ज्यादा अपनी पॉपुलेशन के रेशियो से वो इनकम करता है। चाइना अपनी पॉपुलेशन के रेशियो के लगभग जो है वर्ल्ड की इनकम में अपना हिस्सा आज के दिन रखता है, किंतु भारत जो है अपने वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जहाँ 17% या 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वहाँ हम 3 to 3.5% यानी 1/6 प्रोपोर्शन में हम अपनी। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो पहला मैं ये समझता हूँ कि भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण अभी तक जो भी कुछ हमने रखा हो, एक तो ये है कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री का भी लक्ष्य रहता है कि डेवलपमेंट, विकास। तो पहला तो है विकास दर को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और विकास को हमको इस लेवल पर कम से कम ले जाना पड़ेगा, ताकि जो है हम वर्ल्ड की इनकम में कम से कम इतना हिस्सा हमारा जरूर होना चाहिए कि वो 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की बात मैं नहीं करता, कि हमारी जो पॉपुलेशन है 17 to 18%, जैसा चाइना ने पिछले 30 साल में उन्नति कर करके जो है अपनी पॉपुलेशन के रेशियो में अपने इनकम को किया है, मैं समझ रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो है भारत का दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसके रेशियो में हमारी वर्ल्ड की इनकम भी हो। यानी हम कम से कम हमारी जो पॉपुलेशन के रेशियो में आज के दिन 4, 3.5 या 4% है, वो हम कम से कम जो है 17 से 18% हो, यानी एक लंबी छलांग, एक लीप फॉरवर्ड हमको करना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए जैसा कि मैंने अभी रत्न जी ने मेरे परिचय में बताया भी, तो वहाँ मैं ये पाता हूँ कि हमें कुछ पैराडाइम शिफ्ट करनी पड़ेंगी अपनी पॉलिसीज के अंदर। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। आर्थिक विकास की जो प्रगति का जो इतिहास है, आज से 400 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो हमारी जो वर्ल्ड की जो लाइवलीहुड का जो सपोर्ट ज्यादातर जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर, कृषि पर आधारित था। 19वीं शताब्दी में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है औद्योगिक क्रांति हुई, और हमारे जो है कैपिटल रिसोर्सेज का भी उसके यूज बढ़ा। 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध के बाद और अभी 21st सेंचुरी में जो है अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो चल रही है, दैट इज मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इनोवेशन ड्रिवन, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। अब देखिए, जब ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी तो नेचुरल रिसोर्स ही सबसे बड़ा एक रिसोर्स बना करता था। औद्योगिक क्रांति के समय जो है कैपिटल रिसोर्स जो है उसके अंदर में एक रिसोर्स के रूप में काम आने लगा। किंतु आज के दिन अगर हम देखते हैं तो जब नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है, तो वैसे के अंदर में जो है ये सबसे बड़ा जो रोल है वो ह्यूमन रिसोर्स का रोल है। तो ये मानव संसाधन जो है वो आज के दिन सबसे बड़ा संसाधन है।
और मैं ये बताना चाहूँगा हमारे आज के जो सहभागी मित्र यहाँ हैं, तो इकोनॉमी के बारे में जब हम सोचते हैं तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं 3 प्रकार के हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्स, दूसरा कैपिटल रिसोर्स और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। वर्ल्ड बैंक के अध्ययन के आधार पर जो है हम पाते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का जो वेटेज है टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेस में वो 64% है। नेचुरल रिसोर्स जो है उसका जो वेटेज है 20% है और कैपिटल रिसोर्स जो है वो 100 के अंदर में 16% है। यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है आज के दिन वो कैपिटल रिसोर्स से 4 गुने ज्यादा उसके रिसोर्स की वेटेज है। तो इस ह्यूमन रिसोर्स की वेटेज का जो एडवांटेज है वो आज के दिन हमें हिंदुस्तान में यानी भारत के आर्थिक का जो भी हम रूप ले रखे हैं वहां हमको इसका एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ये एडवांटेज लेने के लिए अभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं और हम 37 करोड़ यूथ जो हैं उसके आधार पर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये जो अवस्था है तो इसमें गैप कहाँ है? तो गैप जो है उस गैप को समझना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी पर्सपेक्टिव में किस कारण से हम अपने यूथ के पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स के पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में जैसा मैंने बताया कि अमेरिका आज जो है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी में 21-22% अपना हिस्सा रखता है। तो वो क्यों, किस आधार पर? तो चूंकि हम जानते हैं जैसा श्रीधर जी ने बताया कि अभी जो इकोनॉमी है नॉलेज ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इनोवेशन ड्रिवन है। वहाँ यूएस के अंदर में उनका इतना आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि यूएस के अंदर में जो टोटल इनकम वहाँ की है 21 ट्रिलियन डॉलर, उसके अंदर में 6.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आधार पर जो उनका पेटेंट का जो रेवेन्यू आता है, जो उनका टेक्निकल फीस का जो रेवेन्यू आता है, जो कॉपीराइट का रेवेन्यू आता है, उनके जो ब्रांड्स हैं उनका जो रेवेन्यू आता है, उससे वो अपनी टोटल इकोनॉमी का मोर देन वन थर्ड 34.68% जो है दैट कम्स ओनली फ्रॉम दी बौद्धिक संपदा, आईपी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से उनकी इनकम आती है। यानी भारत की जो टोटल इनकम है 3 ट्रिलियन डॉलर, उसके डबल से ज्यादा जो है वो सिर्फ बौद्धिक संपदा से कमाते हैं। यानी हमारे 130 करोड़ लोग पूरे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर जिसके अंदर में इंफोसिस और टीसीएस और तमाम सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी आज के दिन जो है वो सारी आ जाती हैं। तो उसकी टोटल मिलाकर के जो हमारी आय बनती है 3 ट्रिलियन डॉलर, उसकी डबल से ज्यादा जो है यूएस आज के दिन सिर्फ बौद्धिक संपदा पर आधारित जो उनकी इंडस्ट्रीज है, आईपी इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है वहां से वो 6.04 ट्रिलियन डॉलर यानी उससे भी ज्यादा, यानी वो जो उनकी इकोनॉमी का वन थर्ड से ज्यादा है वहां से कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को हमको पूरा करना पड़ेगा और उस गैप को पूरा करने के लिए जैसा भी श्रीधर जी बता रहे थे कि हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, हमारे पूरे आईपी इकोसिस्टम को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज हम जो भी स्वावलंबन का पथ लेंगे उसमें हम स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट है, हम सारे जितने भी हमारे ऋषि महर्षियों के जो वाक्य हैं कि वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः और बाकी जो है हम जितने भी बातें रखेंगे निश्चय वो अभ्युदय निश्चय, ये सारा जो है ये तभी होगा आज के जमाने में जब हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में हम उसको बदल सकेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर ह्यूमन रिसोर्स इनटू इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, मानव संसाधन को हमको बौद्धिक संपदा के रूप में हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम बाकी जो भी चीजें आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारी बाध्यता इसलिए है कि हमारे यहाँ जो लोकल जो गुड्स बन रहे हैं हम स्वदेशी की बात तो जरूर कर रहे हैं, ये हम राष्ट्रभक्ति के आधार पर हमारे पेट्रियोटिक व्यूज के हिसाब से हम देशी और स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना चाहेंगे, किंतु इन जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी को जब हम देखेंगे तो वो स्वदेशी वस्तुएं क्वालिटेटिव भी होनी पड़ेगी और प्राइस कॉम्पिटिटिव भी होनी पड़ेगी। सिर्फ हम कह देंगे तो उससे काम होगा नहीं, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ऐसा। स्वदेशी जागरण मंच भी जो है बहुत सारे वर्षों से ये आंदोलन चला रहा है और हम बराबर इस जन जागरण अभियान को चला रहे हैं। इसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी, किंतु प्राथमिकता की जब बात आती है तो वहां पर जो कंज्यूमर्स हैं
वो कंज्यूमर ज़रूर इस बात को देखेंगे कि हमारी जो देशी और स्वदेशी वस्तुएँ हैं, क्या वो क्वालिटेटिव हैं या वो उतनी प्राइस कॉम्पिटिटिव हैं। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, चुनौती है। इसलिए भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण की जब हम बात करेंगे, तो हमको ज़रूर इस बात को ध्यान रखना है कि हम स्वावलंबी होना चाहते हैं। हम स्वदेशी के आधार पर अपने अर्थनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किंतु अभी जो भूमंडलीकरण का जो वातावरण है, इसके अंदर में हमें इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि हमारी जो क्योंकि आज देखिए जिस एरिया में हमने अपने रिसर्च को बढ़ाया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने अपने रिसर्च को बढ़ाया है, फार्मास्यूटिकल के अंदर में अपने रिसर्च को बढ़ाया है। इन 2 एरिया के अंदर में वर्ल्ड में हम कॉम्पिटिटिव हैं। किंतु बाकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के क्षेत्र में देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में देखते हैं, वहाँ हम पाते हैं कि ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ असेंबली होती है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हमारे पास में टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारे उद्यमिता है, किंतु इस उद्यमिता को हमको आगे बढ़ाने के लिए हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में कंटिन्यूअसली जो है, यानी आईपी इकोसिस्टम के अंदर में 5 बातें ज़रूरी होती है कि क्रिएशन ऑफ आईपी, फिर प्रोटेक्शन ऑफ आईपी और एनफोर्समेंट ऑफ आईपी, उसकी कमर्शियलाइज़ेशन। हमारे यहाँ ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं, यानी सीएसआईआर के और बाकी जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में और आईआईटीज़ में जो रिसर्च हो रहे हैं, उसका कमर्शियलाइज़ेशन नहीं होता। उस कमर्शियलाइज़ेशन के लिए भी अवेयरनेस की आवश्यकता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें क्वालिटी रिसर्च जब तक नहीं होंगी तब तक वो कमर्शियलाइज़ेशन संभव नहीं है। यानी ये जो बौद्धिक संपदा का जो क्षेत्र है, इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो नेचुरली हमारी इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस कम होगी। इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस कम होगी तो वर्तमान में हमारा जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो गैप है, अभी लगातार 1991 से लेकर के अभी तक आप देखेंगे तो हमारे यहाँ ट्रेड अकाउंट में डेफिसिट चल रही है, हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट चल रही है, और उसको पूरा करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट में लोन लेते हैं। एक तरफ तो हम आत्मनिर्भर भारत की स्वावलंबी की बात कर रहे हैं, किंतु ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो विदेशी ऋण आज भी हमारे देश के अंदर में $550 बिलियन से ज्यादा है। हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ऑल टाइम हाई $500 बिलियन चल रहा है, किंतु फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सही माने में आपको दिल से बता रहा हूँ कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा अपना नहीं है, ये तो विदेशी पूंजी से बना हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आता है, विदेशी कंपनियां जो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, उनका इन्वेस्टमेंट आज के दिन इंडिया में $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। विदेशी ऋण भी जो हमारी जो इंडियन कंपनी है बाकी सब जगह जो आ रहा है वो हमारे पास में, यानी टोटल विदेशी पूंजी की आज के दिन अगर हम लागत देखेंगे तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो 1.5 ट्रिलियन से डॉलर से ज्यादा की है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। उस लॉन्ग टर्म व्यू में हमको आग के ऊपर में सिर्फ जो है राख का ढेर बैठा करके अगर हम बोलेंगे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है और स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं, तो उसमें हमको बहुत सारी बातों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में हम काफी पीछे हैं। पॉवर्टी इंडेक्स को अगर देखेंगे वहां पर भी हम ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में भी हम काफी पीछे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखते हैं, वहां पर भी हम काफी पीछे हैं। तो इन सब सारी चैलेंजेस को समझते हुए हमारे ऋषि महर्षियों के बताए हुए पथ पर हम चलेंगे, किंतु धीरे धीरे हमको इस बात पर रियलाइज करना पड़ेगा कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन का जो युग है और आज के दिन जो नॉलेज एरा में हम जहाँ प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ आने वाले दिनों में हमको जॉबलेसनेस की और भी चैलेंजेस आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और डिस्रप्टिव इनोवेशन से, तो वहाँ हमको, क्योंकि आज देखिए चाइना ने इस बात को स्वीकार किया, वहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, किंतु इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ जो 1990 के बाद में उनके यहाँ पर भी एमएनसीज गई, किंतु आज चाइना के अंदर में जरूर ये लोग कहते हैं कि भी जो है चाइना जो है कॉपी कैट है और वो टेक्नोलॉजी को वो कॉपी करता है, किंतु उनके अपने यहाँ पर जो है 13.5 लाख पेटेंट फाइल होते हैं सालाना। हमारे यहाँ पेटेंट फाइल होते हैं मात्र 50,000। तो ऐसे के अंदर में चाइना टुडे इज द बिगेस्ट फाइलर ऑफ द पेटेंट्स, और वहाँ हम जो है 50,000 पेटेंट जो फाइल करते हैं उसमें 80% जो है एमएनसीज के होते हैं। हमारे लोकल सिर्फ 20% इन 10,000 होते हैं, उसके अंदर में भी जो 80% जो होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर का जो है वो उसके कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इन फैक्ट्स को इनको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करके हमारे प्राइवेट सेक्टर को जो है सिर्फ सीएसआर हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो तो एक बात है। हमें श्रीधर बेम्बू जैसे ऐसे उद्यमियों की आवश्यकता है जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं और टेक्नोलॉजी के आधार पर रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कैपिटल गुड्स की लागत हमारी कम हो। क्योंकि कैपिटल गुड्स की लागत अल्टीमेटली तभी कम होगी जब हमारे यहाँ लोकल रिसर्च होंगे। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है कि 10,000 साल पहले
से हम जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ाए। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट थी नहीं, ये विदेशी आक्रमण होने लगे उसके बाद जो है, उसके पहले हम 32% की इकोनॉमी वर्ल्ड की हुआ करते थे, आज हम 3-4% है। कि ये बातें तो सारी ठीक है, लेकिन ये जो वर्तमान की जो स्थिति है, इससे उभरने के लिए और हमारे पुराने गौरव को हम दोबारा प्राप्त करने जाएंगे, तो हमको आज की जो युगानुकूल जो सत्य है उसको हमको समझना पड़ेगा, उसको रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब हम नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात तो हम करेंगे जरूर, हम स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग की बात जरूर करेंगे, वो करना भी चाहिए, मैं इसको इनकार नहीं करता। हम वोकल फॉर लोकल होंगे जरूर, और इसके लिए भी जो है हमको, जो मैंने अभी वर्तमान में विशेष करके पश्चिम बंगाल में जहाँ मैं हूँ, वहाँ हमने देखा है कि अभी भी जो है हमारे यहाँ जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में भी जो लोकल प्रोड्यूस हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर बांकुड़ा क्या नाम जो है, बांकुड़ा में, हमारे यहाँ मिदनापुर में, झाड़ग्राम में साल पत्ता, सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी पातानोमिक्स, हमारे यहाँ तंबाकू पत्ता, साल पाता, तेंदू पाता, पान पाता, ये जो चाय पत्ता, ये जो पत्ते की जो इकोनॉमी है, इससे हम करीब करीब बंगाल के अंदर में हम टोटल एम्प्लॉयमेंट करीब 30 से 32 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। किंतु वो एम्प्लॉयमेंट देना एक बात है, किंतु एम्प्लॉयमेंट देकर के भी वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में एंगेज जो वर्कर्स हैं, उनकी इनकम लेवल जो है वो काफी कम है। हम ये कह सकते हैं हमारे फार्मर्स जो है वो किसी न किसी से, चाहे वो लैंडलेस नहीं भी है, लैंडलेस लेबर्स हैं, चाहे वो उनकी अपनी जमीन है, किंतु उनको रेमुनरेटिव प्राइसेस नहीं मिलती है। तो इसके लिए अभी वर्तमान में जो एफपीओज और एफपीसीज की जो बात चली, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसके आधार पर हमको ये भी निश्चित करना पड़ेगा कि हमारे जो इकोनॉमी के जो 3 अलग-अलग क्षेत्र हैं, वो कृषि है, सेवा है, मैन्युफैक्चरिंग है, उनको भी जो है हम कैसे एक सामंजस्य के रूप में, एक समन्वय के साथ हम कैसे बढ़ाएँ, ताकि, क्योंकि अभी देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा 1991 में 35% कंट्रीब्यूट किया करता था, अभी घट करके जो है मात्र 17% हो गया है। पॉपुलेशन की डिपेंडेंस वहाँ 60% से ज़्यादा है, किंतु इनकम में कंट्रीब्यूशन 15% है। सर्विसेज सेक्टर 60% कंट्रीब्यूट करता है, किंतु एम्प्लॉयमेंट की तरफ से अगर देखें तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है 20-25% है। तो ये जो एक विषमता है हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, यानी हमारा जो विकास हो वो एक सामंजस्यपूर्ण हो, रीजनल बैलेंस्ड हो, पर्यावरण के विषय को हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी पर्यावरण का भी बहुत बड़ा विषय है। तो कुल मिलाकर के मैं प्रश्नोत्तर तो होते रहेंगे, किंतु मैं, मेरी दृष्टि में 6 बातों पर मैं जोर दूँगा कि विकास की जो हमारी जो अवधारणा होनी चाहिए, उसमें 6 बातें ज़रूरी है। एक तो हमारा जो विकास हो, वो ग्राम भित्तिक विकास हो। दूसरा जो है हमारा जो विकास हो, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है हम रोज़गार को देंगे, रोज़गार भित्तिक हो। तीसरा जो विकास की जो धारणा हो, वो गरीब भित्तिक, कि गरीब आदमी जो है, यानी जो हम अंत्योदय की बात करते हैं, तो गरीब व्यक्ति जो है हमारे नज़र में सबसे पहले हो। यानी ग्राम भित्तिक हो, रोज़गार भित्तिक हो, गरीब भित्तिक हो। चौथा जो है पर्यावरण भित्तिक हो, और पाँचवाँ जो है हम जो ग्राम स्वराज की बात जो गांधी जी ने जो कही, और हम जो उसको जो देखते हैं, वो हमारा विकेंद्रीकरण की नीति हो। और छठा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की धर्म और संस्कृति पर आधारित हो, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष में अगर वैल्यू बेस्ड, एथिक्स बेस्ड अगर नहीं होंगे, तो भी जो है हम आर्थिक विकास कर लेंगे। तो पाश्चात्य देशों में जैसा हम जानते हैं कि उनको आज नहीं मालूम कि हम पैसे का क्या करें, तो हमारी संस्कृति जो हमारी धरोहर है, और उसी का मतलब जो है अभ्युदय निःश्रेयस, यानी हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारे धर्म संस्कृति के विकास के साथ साथ जो हम आर्थिक और भौतिक विकास करें, ऐसा मेरा मानना है। और इसके आधार पर हम सहकारिता को साथ में लेते हुए, और उद्यमिता को आगे बढ़ाते हुए, स्थानीय वस्तुओं को साथ में लेते हुए, और केंद्रित व्यवस्था के आधार पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जो भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण जो शुरू से रहा है, उसको हम सही ढंग से उसका पालन कर सकेंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और अगर आगे कोई प्रश्न होंगे तो उसका मैं जरूर उसमें सहभागिता रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद धनपत जी। आपने विस्तार से भारत की स्थिति और उसमें बौद्धिक संपदा का कितना बड़ा महत्व है उस पर प्रकाश डाला, और भारत के आगे प्रगति का क्या मार्ग हो, किस मॉडल पे हो, उसके बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। नाउ टेकिंग द लिबर्टी टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन टू श्रीधर वेम्बू जी। Sir, the issue which India faces right now is, since you provide employment to thousands of engineers, and India having
thousands of engineering colleges, lakhs of graduates having engineering degree, and still they are considered as unemployable. And you have to deal with a large number of workforce which needs very refined skills, and those skills need to be updated very frequently. So this gap of, you can say, what is the need of the world, what is the need of the technology companies, and what is being provided in our education, in our technical institutes or in our universities. uh, Being an entrepreneur, what do you suggest that how we can optimally utilize this large number of trained, so-called trained or degree-dhari unemployed youth? How we can productively utilize them? Yeah, so I look at the problem somewhat differently. I look at our primary job as entrepreneur is also to create and nurture the talent, and not just, in other words, for an entrepreneur, anything that you tend to complain about, lack of skills or whatever, is also a problem that we must solve, rather than just say why are colleges or universities not providing skill. We must take it up as a problem to solve. That is why we heavily invest in training. That is what enables us to be productive in rural areas, because we don't assume that there is already talent available. We put in the investment to make talent ready, create the talent, nurture the talent. This approach also is helpful in another way. It actually promotes more loyalty among employees, because you invest in a person, they are naturally more attached to that organization, rather than assuming that we already have a ready-made talent. We actually invest in creating the talent. So that is something that we do. And so I would suggest that entrepreneurs take that mindset, that we will create and nurture the talent. And there is a lot of very raw talent in our nation, but it has to be shaped and molded. And that is training, that is skill development, all of that. That's a job that is not just of colleges or universities. And the reason why colleges and universities often don't do a good job in this mission is most only, you take even any advanced country, take Germany or take Taiwan, any of these countries, the colleges only get better in an area after industry develops in that area, because there is a flow of talent that is training. So, for example, in California, I know programming training is done by people who are active programmers in the industry. They come to these colleges and teach part-time classes, all of that. So the students get a lot of exposure. But if there is a university in a rural area, you don't have industry there. How are they going to get the people who will train, who will teach? And that is why they don't do a good job. So it's not, I won't blame them, because they do not have the experience base to mold the new talent, because the instructors themselves don't have experience. So that is the bootstrapping problem. How do you create instructors? You ought to have industry. So the industry cannot complain that we don't have skilled talent yet. We have to invest in it. Then once we do that, the next generation of colleges now have people, volunteers from industry, or people who move from industry to teach. All of that happens. So the skill level automatically goes up. So it's very important for entrepreneurs to invest in training, because particularly in our nation, there's a vast amount of youth that need to be trained, and the returns are enormous on skill development. To give you an idea, if we invest, say, 3 or 4 lakhs to train one person, and we invest that kind of money, 3 or 4 lakhs, often 5 lakhs to train a person, the productivity we can raise to maybe 20 lakhs, 30 lakhs per year. The annual productivity gain from the 3 or 4 lakh investment in training could be 20, 30 lakhs per year, every year. So this is actually, in a GDP term, the return on skill development is enormous. And that is why I would say that companies, entrepreneurs, industries should invest in skill development. That is my solution. And once we do that, the colleges, universities in that area, they automatically get better. Thank you, sir. Thank you very much. So another issue,
on which you can answer the best way is Dhanpatji talked about role of the human resources can play role of natural resources and role of capital. Now you have developed a company uh, without taking the what we call the external financial help that way, and you also passed 2 3 phases in which many IT companies were in a troubling zone, the dot-com burst and then this 2008 crisis also. So what would you suggest to young technocrats and young entrepreneurs? uh, how do they see the value of capital in terms of developing a profit making company in long term? So I see capital in a broader term than only financial capital. There is financial capital, there is money which a capitalist or somebody invests. But the most important asset for the company is the human capital we develop, the skills and the know-how, the knowledge. As Agrawalji mentioned, the value of all that in the brain is far more than value of any physical assets or money in the bank. So it's very important for entrepreneurs to build that knowledge capital, skill capital, all of that, and cultural capital. So that is equally important. And if we have a strategy, particularly with the rural area, you can reduce the consumption of financial capital because we simply need less money. Rent is cheap, land is cheap. So you can actually operate at much lower cost in a rural area. Then if you invest, you can invest the proceeds in skill development and training. And I gave example in my presentation. You pay 10, 20 lakhs per acre versus 10, 20 crore per acre. That kind of implied difference. Even in rent, 5, 6 rupees, 10 rupees per square feet in rent versus 70 rupees, 80 rupees, 100 rupees per square feet in rent. The difference can go into skill development, nurturing the talent. And naturally, that type of difference, so you can reduce the amount of money you need to operate, but at the same time, you create world-class skills, then it will allow us to be competitive long-term. So that is what I recommend to investors. It is not that don't take VC, but see how you can maximize your runway from, if you raise, say, 1 or 2 crores or 5 crore, whatever, you see how you can maximize your runway, how long you can operate with that. That's what I would suggest. Thank you, sir. I request our participants, if you want to raise any question, you can post in the comment section. You can raise your hand. Vinod Johri ji, you have raised your hand. Please be very brief. Naresh Agrawal ji has also raised his hand, and I see a couple of more hands. Vinod ji, yes, very briefly. Namaskar. Please Namaskar. ask So the question. my suggestion is to create a website of Swavalambi Abhiyan because we have launched in a very big way to with the incorporation of all links of websites of PAN, Aadhaar, income tax, GST, MSME. So this is my limited question, request to you both, so that we get direct questions from participants now, Jilla level, Vibhag level. So they raise these questions, how to do it. So how to do it is a major issue now. So kindly create a website for this purpose. Thank you. स्वदेशी ऑनलाइन में ऑलरेडी वेबसाइट क्रिएट की हुई है और वहां पर जो है इस तरह की जो भी प्रश्न है आप वहां पर रख सकते हैं. Yes, Naresh ji. Yes, very good evening to all. Vande Mataram. Respected sir, give us one practical solution that I know particularly some of the technocrats who are BTech, MTech, MSc Physics, MS in Mathematics, etc. But how to start their new entrepreneurship? The problem happens how to assist and how to seek the assistance of financial. Whenever they go to bank, a lot of problematic issues are there, and whenever they go to Jila Udyog Kendra, several types of complications are there. So any platform is there to provide direct financial assistance to them. Please explain. देखिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, इसलिए अभी ऐसा तय हुआ है कि स्वावलंबी अभियान के अंदर में जो है सिर्फ एक संगठन के द्वारा नहीं बल्कि कई संगठनों मिल करके सभी अपना सहयोग देंगे
और लघु उद्योग भारती जो है, हमने कई इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, कार्यशाला आयोजित की है, और अभी हम सभी प्रांतों में और पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यशालाएं चल रही है, और इस तरह के कई प्रश्न आते हैं, और विशेष करके सारी समस्याओं का जैसा नरेश जी ने बताया है, इसका मूलतः 3 तरह की समस्या है, जिसको हम एफटीएम कहते हैं, यानी फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। ये 3 तरह की समस्याएं इन जनरल रहती है लोगों की, और उसके समाधान के लिए जो है लघु उद्योग भारती ने भी जो है इस तरह के उपाय बता रखे हैं कि बोला जो भी प्रॉब्लम है, तो अभी ये वेबसाइट के अंदर में जो है हम लोग थोड़ा इसका और प्रचार प्रसार करेंगे, और जिले लेवल तक जो है हम इस तरह के उद्यमियों को बुला करके उनको बता रहे हैं कि भाई आपकी जो समस्या है, चाहे वो बैंक की समस्या है, चाहे मार्केटिंग की समस्या है, इसका समाधान हम आपको देंगे। तो अभी लघु उद्योग भारती का 23, 24, 25 अप्रैल को गुवाहाटी में राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो रहा है। तो ये जो एक अभियान है, इसके अंदर में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, सेवा भारती, सहकार भारती, स्वदेशी जागरण मंच तथा लघु उद्योग भारती, सभी ऑर्गेनाइजेशन, एबीवीपी, बीजेपी, सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर 12 संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, और मेरी समझ में ये समस्या है, किंतु इसका समाधान भी है, किंतु सिर्फ कोऑर्डिनेशन की और कम्युनिकेशन की जो गैप है उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, वो हम करेंगे नाबार्ड के सहयोग से, पेडा के सहयोग से, तथा जो सिडबी है तथा अन्य जो संगठन है, सबको मिला करके। और कई लोग ये भी बताते हैं कि मुद्रा लोन देते ही नहीं है बैंक, उन सारी बातों का समाधान है, सब में एक ट्रांसपेरेंसी है, परंतु इसके लिए जो है योजना चल रही है जी। नरेश जी, आपको समाधान मिलेगा। Prashant Sindhi, you want to ask a question? Thank you for providing me the opportunity to ask a question. My question is to Sridhar ji. Sir, why can't we focus for the production of consumer goods in rural areas instead of focusing on capital goods in rural areas? My presentation is actually about enabling consumer goods, but to produce the consumer goods, we need lower cost capital goods. So the capital goods will be designed anywhere, but the rural areas only will produce consumer goods mostly for household goods. But to enable that, we need a lower cost capital goods strategy. So that was my thrust of my presentation. So in other words, you even to make a ceiling fan or iron box, those kind of consumer goods, you need capital goods. If they become lower cost, we can set up factories in rural areas to make those consumer goods. So that was my point. इनका जो सॉल्यूशन है, वो जैसा मैं एक समस्या बता रहा था, उसका सॉल्यूशन इनके पास में है कि भाई हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस तो तभी होगी ना जब हमारे कैपिटल गुड्स का कॉस्ट कम होगा और स्किल लेबर काम करेंगे, तो वो सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक बात है। Yes, Mohan Jain ji. Namaskar. It was a nice presentation. I'm calling from Chicago. I've known Kuldeep ji for many years, since his Swadeshi days. And I have a suggestion that we produce all the raw material which we consume in the cities, in the villages. Why can't we add value to all those items before we send to the cities? Instead of processing and doing all the things, if we can do. Other suggestion is there is a lot of biomass around the villages. How we can utilize that biomass to add value-added products. And a friend of mine, Mr. Hariharan, he has been working on it last 25 years. I've sent a small video to Kuldeep ji via email on that, and he has been able to produce so many things, and he thinks that we can add 4 or 5 trillion or more to rural economy by utilizing the biomass which lies around the village, which grows every year. And he has produced energy, he produced fertilizer, he can produce wood-like products from utilizing all that biomass. And I will be interested that if you, all of you should just look at it and suggest it what can be done. And all these units can be set around the villages, so giving the employment to the millions of people in the villages itself, and collecting and building the stuff from the raw material which is available around the villages. Like I'm giving examples, simple example. All the vegetables and things which we grow like in the US, why can't we process them in the village itself and pack there and then send to city, which will help solve the problem of the waste, which is being disposed of in the cities, cutting the villages, all the vegetables and all that. And also it will become feed for the animals so that they can
get all the material which is waste in the city. So it will can add to additional productivity. The weight will be reduced, transportation cost will be lower, and people in the cities will have something they can use readily, and it will give the jobs to the village women to process all that food. So here are some suggestions. We can talk more offline, and if somebody is interested, I send in the email to Kuldeepji and connecting Mr. Hariharan so that he can share that information with all of you, a short video, and then he can give more information of what he has been able to do. He has been working last 25 years on this. He is an engineer and has developed interest in this area and utilizing waste which is available around, or not waste, biomass around the villages. Thank you very much. Thank you, Dr. Jain. Dhanpatji, there is a question in the comment box about how do you see religious economy in coming future of India, and what role technology can play in the religious economy, since we consider India as a civilizational country, and how do you visualize the synergy? देखिए, रिलीजियस टूरिज्म जो है, ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ हमारी अर्थनीति को और ज़्यादा सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जो रिलीजियस जो सेंटर्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसा अभी हम सभी ने देखा कि काशी के अंदर में मोदी जी ने जो जिस तरह से वो कॉरिडोर को ठीक किया है, उस तरह ही जो है, अगर हमारे जितने भी तमाम रूरल एरियाज में, अदर एरियाज में जो हमारे जो सेंटर्स हैं, रिलीजियस सेंटर्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम थोड़े ठीक करते हैं। दूसरा नंबर जो है, उनके जो मैनेजमेंट में जो लोग लगे हुए हैं, उसके मैनेजमेंट को भी जरा ठीक करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि रिलीजियस सेंटर्स में जाने के बाद में लोगों को काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है कि वहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हमको ठीक करना पड़ेगा। यानी हम अपने लोकल मैनेजमेंट को ठीक करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, तो अदरवाइज जो है, हमारी जो रिलीजन इकोनॉमी जो है, वो अपने आप में आज एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है हमारे यहाँ। और ये इसको हम और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया जो है, वो हमारे इन सांस्कृतिक, मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं करूँगा, धर्म और संस्कृति दोनों को साथ में जोड़ें, तो ये बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। और लोगों को आज के दिन जो मनोवैज्ञानिक ढंग से भी जितनी समस्याएं हो रही है, तो इन धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पर जाकर के उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। और वो ऐसा समझिए कि जो है, छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं और तरह-तरह की जो वहाँ जो सामग्रियाँ बनती है, उन सारी चीज़ों को बनाने वाले जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, उनकी भी डिमांड्स बढ़ेंगी। और कुल मिलाकर के स्थानीय वस्तुओं का डिमांड बढ़ना, स्थानीय जो एम्प्लॉयबिलिटी है, उन दोनों में ही सहायता मिलेगी। मेरे ख्याल से रिलीजन को एक अलग सेगमेंट के रूप में देख करके इसकी इंटायर इकोनॉमी को और ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। और इसमें जो कमियां हैं, जैसा मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह मैनेजमेंट की, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। और थोड़ा सा इसके प्रचार की भी आवश्यकता है। सरकार को भी टूरिज्म के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी थोड़े अलग से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है धनपत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हर बड़े टेम्पल सिटी की अपनी एक इकोनॉमी है, और वो जो पिलग्रिमेज हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके कारण लगभग हर साल लाखों रोजगार उत्पन्न होते हैं, और कुछ तो स्थायी रूप से रोजगार रहते ही हैं। तो हाँ, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उस पर ध्यान देने की, उस पर शोध करने की, और उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर हम गाँव में रहना चाहते हैं, रूरल इकोनॉमी को एनर्जाइज करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, तो हमें पहले रूरल एरियाज की इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। श्रीधर बैम्बू जी ने इसको टच किया था। उन्होंने कहा था कि रोड्स बन गई हैं, स्कूल्स बन रही हैं, और अब चूंकि स्मार्टफोन के कारण टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी जो है वह भी फास्ट है, तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी,
उसी रेशियो में, उसी रफ्तार के साथ हम मान सकते हैं कि वहाँ कंपनियां भी स्थापित होंगी, वहाँ व्यापार भी हो बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। देखिए कुलदीप जी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं ना, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में देखिए, एक तो कुछ प्राइमरी नेसेसिटी एजुकेशन हेल्थ की है, वो तो एक बात है। किंतु सबसे बड़ी जो आज के दिन रूरल एरियाज में है, जिसको अभी वर्तमान सरकार ने सही ढंग से सोचा है, और वो हमारी पुरानी जो कोऑपरेटिव की जो एक पद्धति थी, उसके अंदर में अभी जो नया एक ड्राइव लिया गया है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज, और इसके आधार पर जो है जो वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, उनके इनपुट कॉस्ट को कैसे घटाया जा सकता है, उनके आउटपुट को मार्केटिंग के लिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपने देखा होगा कि जो है मई के अंदर में जब हमारे वित्त मंत्री ने जब एक नया जो पैकेज, ये कोविड पोस्ट कोविड जो अनाउंस किया था, उसके अंदर में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। तो मेरी समझ में आने वाले दिनों में सरकार सचेष्ट है, और कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से तथा एफपीओस के माध्यम से जो है, और नाबार्ड, एपेडा इत्यादि भी जो है, जैसा आप देखे होंगे कि इसी के कारण से अभी हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ रहे हैं। तो ये वैल्यू एडिशन का स्कोप बहुत है, और चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के बाकी लॉन्ग रिमोट एरियाज हों, उन सबके अंदर में सरकार भी सचेष्ट है, और मेरी समझ में एक सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। और इस तरह करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में रूरल इकोनॉमी को और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सर धन्यवाद। एक और प्रश्न है, वो उसी से जुड़ा है जो पहले पूछा गया, कि जो नया उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, उसे कैपिटल रेज करने की दिक्कत आती है बैंक से और दूसरे जगहों से। तो इस पे आपने पहले ही जवाब दे दिया है, तो मुझे लगता है वही उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। I express my gratitude to both Sridhar ji and Dhanpal ji, and also all the participants who were patiently listening, and also who raised questions. And very eminent, prominent people are here. Jagmohan ji, Rajput ji here, Professor Sheila Rai, our IPF chairperson, she is also here. Chandrasekhar ji, as I mentioned, former IT Secretary of Government of India, he's also here. Many academicians, many young technocrats. So I thank you, all of you, and it was really enlightening and insightful to listen to our speakers today. Once again, I express my gratitude to all of you. Thank you very much. Thank you, Dhanpaji. Thank you all of you. Thank you very much.